So boys and girls, here is the time that we start with external reconstruction. When you are studying external reconstruction, you should always study this after you have studied with your amalgamation. Amalgamation के बाद में आपने external reconstruction पढ़ना है, internal reconstruction पढ़ना है, demerger पढ़ना है, divestiture पढ़ना है, asset swap पढ़ना है. उसी sequence में नहीं पढ़ना है कि पहले divestiture पढ़ लिया, ऐसा नहीं. You will understand the gist only when you study in this following sequence. All right. So now we are studying external reconstruction. We are studying external reconstruction. Now what is reconstruction of a company? We have already seen that. The whole corporate restructuring revolves around the changing the structure of the company. It could be on the asset base, it could be on finance base, it could be on the management base. It could be when the company is making the losses via internal reconstruction where shareholders' rights are reduced. Agreed? It is sometimes in case of amalgamation also. The term is used to describe the drastic formal changes in company's capital structure as a result of certain circumstances. That's what we have already seen. Reconstruction of a company, in fact, can take in variety of the forms, but जब हम इसकी बात करते हैं internal और external reconstruction, तो हम इसका नाम बोलेंगे internal reconstruction and external reconstruction. Am I communicating? All right. Internal reconstruction we have already seen. Now we have to understand what is external reconstruction. We are first going to see the definition what happens. तो सुनिए. External reconstruction में एक कंपनी को बंद कर दिया जाता है और उस कंपनी को नया नाम देकर उसी assets के साथ शुरू किया जाता है. This happens when you want to change the name of the company thoroughly. Agreed? पहले के losses है, तो उन losses को, the company is making the losses, now you want to enter into the business with a new identity, so that's when you do it. Check it up. Meaning, in external reconstruction, a new company is formed for the purpose of taking over the business of existing sick company which has incurred huge losses and is facing financial difficulties. Is that okay? So, matlab, how you would, what we have studied in amalgamation, company A is taken over by company B. We call it as absorption. How it is different from this reconstruction? See, external reconstruction is done when you are not doing well and when you are into losses. So now to give you a new identity, what you do is you form a new company. In internal reconstruction, what you did was you kept the same company and you reconstructed it as per the scheme. Agreed? Like Suzlon did. But there are external reconstruction cases where a new company is formed to take over the whole business of loss making into the new company with possibly the new name. Existing company is wound up by selling its business to the newly formed company which is generally similarly named and owned by the same shareholders to a greater extent. Is that okay? So it is transferred to a new company with new name, generally it is similar. ऐसा कुमार बिल्डर्स के केस में हुआ. When in 2008 there was a huge losses to the Kumar builders, mounting losses, and then they could not take care of those finances which they have taken already, the debt which they are already taken. So नाम भी खराब हो गया था क्योंकि उनके कई सारे प्रोजेक्ट डिलेड चल रहे थे. So from there they changed the name to Kul. Are you getting my point? So that a new picture is portrayed and you again come into the business. Because the experience is there. The experience is there just because the time was bad and just because there was a sudden drop in the demand, they could not repay the finances and all. So to revamp the business, generally that is done. Real life example of it, if I have to quote it, according to the Google, it is Gold Star was liquidated and LG was incorporated to take over the business of Gold Star. Now LG, आपने Life's Good, ये company सुनी होगी. Now Life's Good, this company is a Korean company. This company was formed by liquidating Gold Star. And the owner was also same of Gold Star. And the owner of LG was also same. So Gold Star was liquidated and all the assets were transferred to the LG. And LG became the owner. Is that okay? So in short, when a company has no power to operate his own business due to heavy loss,
and it sells his all business to a new company, it will be an external reconstruction. But there has to be loss, earlier loss, sick company, and the sick company becomes a new company. So a new company is formed just to take over the old company. It is not a genuine absorption. आपको लग रहा होगा absorption जैसा है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है. I understand it is getting absorbed, but then the purpose you need to understand कि यहाँ पर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको नया रूप, एक नई आइडेंटिटी देने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है. How it is carried out? It is very simple. It's just like amalgamation, what we have already done. Step 1, liquidating the existing company. Existing company receives consideration. Generally, the consideration will be received in form of shares. Okay? तो अब मान लो ये shares है. पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में क्या ये शेयर्स है, ये शेयर्स इस कंपनी को दिए गए, इस कंपनी ने अपनी नेट एसेट इधर दी. एग्रीड? ये शेयर्स किसको बांटे जाएंगे जो इधर मिले उनको? It will be given to the shareholder. So ultimately, who has become the shareholders of new company? Old shareholders only. Have you understood this? Moving on. Step number 2, incorporating immediately in another company. Use consideration received newly formed company. Yes or no? तो आपने shares देकर एक नए assets को buy कर लिए पुरानी कंपनी में से. Newly formed company will take over the business of the outgoing company. Yes or no? ये इधर से इधर ट्रांसफर हो गया. That's it. Accounting entries, the best part is you have to do the same accounting entries as you have done in the absorption. So there are two companies, one is the transferor and the other one is transferee. In the books of transferor, the entries would be, they have to empty the balance sheet into the realization account. Then they have to make the PC due. Once the PC is due, you have to receive the PC and distribute it amongst your shareholder, and loss, of course, has to be transferred to shareholder. We have already seen that. Now, what are the entries in the books of a new company? They are just like in the books of transferee company. The entry is business purchase to liquidator of transferor, and then you acquire all the individual assets to individual liabilities at whatever value they say, to business purchase, balancing figure debit side में goodwill, credit side में CR, और फिर जो जो आपने चीजें दी वो बताएंगे, liquidator of transferor to equity share capital to securities premium or whatever. Is that okay? Now, difference between internal reconstruction and external reconstruction. एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क है? इंटरनल में भी लॉस मेकिंग कंपनी है, बट हम उसी कंपनी में रहकर असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज चेंज कर देते हैं टू ब्रिंग इट एट अ प्रॉफिटेबल नोट. नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, बट अदरवाइज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव इज वन एंड द सेम. In case of internal reconstruction, no company is liquidated. Of course, if you are forming a new company, the old company will have to be liquidated. In external reconstruction, one company is liquidated. Internal reconstruction requires court's confirmation, but external reconstruction can be affected without court's confirmation. That is, उसमें BIFR का involvement होता है, इसमें BIFR का involvement नहीं है. Internal reconstruction is slow and tedious, but external reconstruction can be carried out easily. In case of internal reconstruction, the company is able to set off its past losses against future profits, whereas in case of external reconstruction, the past losses of an old company cannot be set off against the future profits of the new company. Why? Because section 72 of the Income Tax Act says that loss can be carried forward only by the owner. Now in that case, suppose A company limited went into external reconstruction, their losses can only be set off by A limited. But now A limited has gone into what? B limited. Now B limited is never incurred that losses. Who incurred that losses? A limited. So only A limited can carry forward. B limited cannot carry forward those losses. And that is the reason you will not find many examples of external reconstruction in real life. When you Google it, you will find theory, but you will not find out the real life example of external reconstruction. Is that okay? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, majority of the companies, what they do is they change the name of their business, because that itself will serve the purpose of changing your identity.
Now, Kumar Builders का जो मैंने example दिया, it is close to external reconstruction, but they never formed a new company. They just changed their name from Kumar Builders to Kul. Are you getting my point? Because that is the only benefit. You are getting a new identity. बाकी सब कुछ आप वही कर रहे हो. Agreed? Let's go on. जैसे मैंने आपको example दिया, real life example on external reconstruction is Gold Star was liquidated and LG Corporation was incorporated to take over the business of Gold Star. In the past when we studied, this was the example. So boys and girls, you are now requested to come down to the question number 1. Please come down to question number 1. VET Limited was unsuccessful and had to be reconstructed for this purpose. Dry Limited was incorporated with an authorized capital of 50,000 shares of 10 each. The shareholders in VET Limited to receive 2 shares of rupees 10 each, credited as rupees 6 paid for every 3 shares held. The balance of rupees 4 was to be paid as to 2 on application and 2 on allotment. The trial balance of VET Limited on the date of reconstruction was as follows. So क्या हुआ बेटा? VET Limited was unsuccessful. Now who was formed to take over the business of VET Limited? Dry Limited. The shareholders of VET Limited to receive 2 shares of 10 each, credited as 6 paid. मतलब they were said as they were partly paid up. Do you remember in internal reconstruction also we used to reduce the value? यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया कि उनको 2 शेयर मिलेंगे, बट जिनका 10 रुपए फेस वैल्यू होने के बावजूद भी पेड अप वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 6. तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ फिर बाद में वो पैसा मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं. फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, द बैलेंस ऑफ रुपीज 4 वॉज टू बी पेड एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड 2 ऑन अलॉटमेंट. 2 रुपए एप्लीकेशन के वक्त और 2 रुपए अलॉटमेंट के वक्त. सो न्यू फंडिंग इज बीइंग गिवन इन द कंपनी. नाउ मूव ऑन. Now they have given you the trial balance of VET Limited. Share capital दिया बेटा, patent rights दिया, sundry debtors creditors दिया, stock, cash at bank, preliminary expenses and P&L account. The creditors were to be discharged by the new company on the following basis. Preferential creditors 20,000 in full in cash. ये ग्रुप 2 में था, देखो आपको लिक्विडेशन में उसका कैश में पेमेंट करना है बोला. Creditors for rupees 80,000, 50,000 in cash, उनको भी कैश देना है. And creditors for 50,000 in form of debentures. The cost of liquidation amounted to 3,000, which was also met by Dry Limited. Fraction of shares in all amounted to 133.1/3 shares in terms of shares of Dry Limited, for which cash was paid. मतलब Dry Limited जितने shares issue कर रहे थे उसमें fraction of shares कितने निकले? 133.1/3, जिनको उन्होंने क्या दे दिया? Cash. The other shares were duly allotted and all payment due in respect of them received by Dry Limited. 5,000 of unissued shares were offered, were taken up and paid for in cash. Close the books of VET Limited and open the books of Dry Limited. Give its balance sheet and value of patent rights being adjusted to the required extent. इसका मतलब ये है कि जैसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या किया करते थे? पेटेंट की वैल्यू राइट ऑफ किया करते थे. इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो गुडविल में नहीं जाएगा. यू आर गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पेटेंट. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्लिक होगा कि व्हाट इज द डिफरेंसेस एंड ऑल. Please come down to the calculation of PC. Everyone is first going to check. 50,000 shares है बेटा. Go and check. VET Limited के 50,000 shares है. क्या proposal दिया? कितने shares देंगे? For नहीं. For 2 shares they will give 3. Sure. To receive 2 shares for every 3 held. So beta 50,000 divided by 3.
into 2, it is 33,333, 1/3. इसमें से उन्होंने क्या बोला है? डिस्चार्ज ऑफ पीसी, कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स, उन्होंने खुद ने बोला था 133.1/3 into ₹6. Why 6? Because they are going to credit it as not fully paid up, but only ₹6 paid up. So 133.33 into 6, कितना कैश में देंगे? 800. And the remaining would be given in a form of shares. So equity shares of Dry Limited, it would be 33,333.13 minus 133.333 is equal to how much? 33,200 equity shares into ₹6, 199,200. So the total PC matches up to 2 lakh. So you purchase the business for 2 lakhs, in other words. Is that okay? So please write it down. अगर आपको याद होगा अमालगमेशन में भी मैंने आपसे कहा था कि यू शुड ऑलवेज टेक इश्यू प्राइस. यहां पर it is ₹6. It is not 10. You cannot take 10. You have credited only 6 paid up for ₹10 का शेयर. ओके बेटा, बेटा एक चीज नोटिस करो, 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10, 5 लाख. मतलब पहले शेयर होल्डर के पास 5 लाख था, अभी कितना मिल रहा है? 2 लाख. इसका मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जैसे हम उनके राइट्स रिड्यूस करते हैं वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस. मूविंग ऑन, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, अभी सुनिए क्या क्या करना है आपको. पहली चीज, आपको सारी एसेट्स को खाली करना है. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. एग्रीड? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी एसेट्स है? यू हैव गॉट पेटेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, यस और नो? तो ये देखो, टू पेटेंट राइट, टू सन्ड्री डेटर्स, टू स्टॉक, टू कैश एट बैंक also 15,000 because we are transferring the whole business. So what I have done, I have only transferred the asset. Can you please make this entry? बैलेंस शीट को खाली करना है, उसमें से हमने असेट्स को खाली किया अभी तक. एग्रीड? जरा एक बार चेक करो तो इधर क्वेश्चन में एक बार चेक करो तो. द क्रेडिटर्स वर टू बी डिस्चार्ज बाय न्यू कंपनी. तो मतलब हमको क्रेडिटर्स भी भेजना पड़ेगा. लाइबिलिटी कितनी है बेटा जी? एक ही लाइबिलिटी है 1,50,000. और ये कहां पे जाएगी 1,50,000? न्यू कंपनी के पास जाएगी क्या नहीं जाएगी? क्योंकि तभी वो डिस्चार्ज कर पाएंगे. हाँ है ना? अब बेटा एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि वेदर कैश विल बी ट्रांसफर्ड और नॉट. ऑलवेज रिमेंबर, इफ इट इज एन असेट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट इनटू द न्यू कंपनी. What we are not going to transfer is the accumulated losses, preliminary expenses, accumulated losses. This kind of things we are not going to adjust. But remaining cash, which are tangible assets, which are real asset, we are going to transfer. Subhita ji, next entry, creditors account debit 1,50,000 to realization account. If you remember, at book value.
बैलेंस शीट में अभी बेटा और कौन सा आइटम रहा? इक्विटी शेयर कैपिटल रहा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहा और एक्यूमुलेटेड लॉस रहा। इसके अलावा और कोई रहा क्या? सो बेटा हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू P&L अकाउंट। यस और नो? सो चेक कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टू P&L अकाउंट। मतलब ये नए कंपनी में ये नहीं जा सकते, लॉसेस नहीं जाएंगे। हो गया बच्चों? फिफ्थ लेवल पर ड्राई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये पीसी ड्यू बनाया बेटा। पीसी कितने का है? 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख बीइंग पीसी ड्यू। बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 चेक करो, मुझे बताओ ड्राई लिमिटेड आपको क्या क्या दे रही है? कैश और क्या? शेयर्स। सो कैन आई नॉट से कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 800, इक्विटी शेयर्स इन ड्राई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 199 200 टू ड्राई लिमिटेड अकाउंट 2 लाख। इज इट ओके बच्चों? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का लॉस है बेटा? 1 लाख। सो 1,30,000 का लॉस हुआ, एक बार चेक कर लो। 4,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 2 लाख, कितना आ रहा है? 1,30,000 पॉजिटिव है फिगर, मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है। एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,30,000। और आपके पास जो भी चीजें है, ये कैश आया और शेयर्स इन ड्राई लिमिटेड, ये हम किसको बांट देंगे? शेयर होल्डर्स को। Is it okay? Now here you see equity shareholder to bank to equity shares in dry limited, ये हमने डिस्चार्ज ऑफ पीसी किया। अभी बेटा जब हम स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे तो एक चीज का नोटिस करना आपने, कि क्या कोई तंदुरुस्त नई कंपनी तैयार होती है कि नहीं होती है। आर यू गेटिंग अ न्यू कंपनी विच इज वेरी हेल्दी? तो उसमें क्या होता है कि पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते थे जैसे उनका रिक्वायरमेंट रहता था, वैसे इधर भी करना है। बट क्या करना है, क्या पहले उसको नए कंपनी में लेना है और नए कंपनी में लाकर जैसे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ वैसा डिस्चार्ज कर दो। सो ये देखिए एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर 2 लाख। फिर हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे,
और इनकॉर्पोरेट करने के बाद में किसको कितना पेमेंट करना है ये भी हम देखेंगे. इज दैट ओके? तो पहली एंट्री कीजिए, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेट लिमिटेड, 2 लाख 2 लाख. All right, done. What is the next entry you have to do? You have to acquire all the assets and liabilities at fair market value. आपको याद है? अब बेटा ये देखो जरा ध्यान से. Patent right will be a balancing figure. Why? Because they have said everything has to be adjusted in patent right. यहाँ पे गुडविल नहीं रहेगी. गुडविल आ भी नहीं सकती बेटा, illogical है. Sundry debtors. Please let me know what is the value of sundry debtors which I can take up at book value. What is that value? 1,45,000. Stock. Can I get the value of the stock? 70,000. Cash at bank 15,000. To sundry creditors 1,50,000. बट बेटा मैंने अभी इधर क्या किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स को जितना देना है उतनी ही वैल्यू रखी. इज दैट ओके? अदरवाइज एवरी टाइम आई हैव टू एडजस्ट इट इनटू द राइट ऑफ पेटेंट. सो ट्रिक कैसी है देखो, ये 1,20,000 कैसे है. इसका वर्किंग नोट किया तो था मैंने. ओके, इसके वर्किंग नोट की थोड़ा सा सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो गई है. वर्किंग नोट बनाया है मैंने. ओके, एनीवेज कितना क्रेडिटर्स को सेटल करना है एक बार जरा देखो. क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू कितनी है? यू से 1,50,000, बट 1,50,000 में से उन्होंने क्या बोला, इट हैज टू बी डिस्चार्ज लाइक दिस. ये देखो बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 20,000 इन फुल, मतलब बुक वैल्यू 20,000 थी क्या? एक बार लो, 20,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, 150 आ रहा है क्या? बुक वैल्यू 150 मैच हो रहा है जो तुम बोल रही थी, मगर उसका हम डिस्चार्ज कितना करने वाले? 20,000, 50,000 एंड 50,000. सो 20, 50, 50 कितना हो जाता है? 1,20,000. तो बेटा 1,20,000 ही देंगे ना. ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि हम 1,50,000 को पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे, मगर उसके बाद में जब पेमेंट करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो वापस एक अड़चन आएगी ना कि वो वैल्यू कहां, डिफरेंस कहां एडजस्ट करूं. तो तब पेटेंट राइट में करने से अच्छा, और तब गलतियां भी हो सकती है, इससे बेहतर ही होगा कि राइट नाउ वी टेक क्रेडिटर्स एट द डिस्चार्जेबल वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू. एग्रीड और नॉट? सो आई विल टेक द फेयर वैल्यू ऑफ हाउ मच? 1,20,000 टू बिजनेस परचेज 2 लाख. Make this entry, or patent right will become a balancing figure, 90,000. Done. Good. इसके आगे क्या करना है अभी? लिक्विडेटर ऑफ वेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 800 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 199,200. व्हाट वी हैव डन? यस, वी हैव जस्ट डिस्चार्ज द पीसी. ओके बेटा, अभी जब इक्विटी शेयर कैपिटल दिया तब आपको कैश भी मिलनी पड़ेगी. कैश कितनी मिलेगी आपको? 2 रुपए. कितने शेयर्स आपने इश्यू किए बेटा? जरा सोच समझ के बताना, ये गड़बड़ नहीं है करना. हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स हैव यू इश्यूड? $133,200 is the right answer. So 133,200 into 2. So you are going to make an entry, bank account debit to equity share application and equity share application to equity share capital. Also you can do. Agreed? So बेटा एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट किए उनसे एप्लीकेशन का पैसा भी आएगा कि नहीं आएगा? यस.
being application money received on 33,200 shares. आपको और भी कोई पैसा मिलने वाला है अलॉटमेंट का। सो बेटा अभी मैं क्या करूंगा, ड्यू का एंट्री करूंगा और डायरेक्टली शेयर कैपिटल में डालूंगा एंड देन आई विल रिसीव द अमाउंट। सो देखो जरा एंट्री कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इज दैट ओके? एक एंट्री हमने कंबाइन कर दी, ड्यू की एंट्री, ड्यू शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हमने एक साथ शेयर कैपिटल में डाला और फिर उसके बाद में उसको रिसीव कर दिया। Have you done till this point? So 4, 5, 6 लेवल की एंट्रीज हमारी हो गई है। अब बेटा 7th एंट्री क्या होगी देखिए, पेटेंट राइट्स अकाउंट डेबिट। कोई मुझे बता सकता है ये पेटेंट राइट्स अकाउंट डेबिट, हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करते थे तब हम एंट्री क्या करते थे, गुडविल ऑब्लिक सीआर टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक। अब यहां पर हमको सारा एडजस्टमेंट किस में करना है, पेटेंट राइट्स में। सो एंट्री क्या होगी, पेटेंट राइट्स 3000 टू बैंक 3000 बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मेट। यस और नो? पेटेंट राइट्स टू बैंक, डन। बेटा अभी नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की है। जरा देख के बताओ, 1,20,000 पर हमने ले लिया, वो अच्छा काम किया। अब 1,20,000 में से 20,000 को क्या देना है, कैश। 80,000 वाले को कितना देना है, 50,000 कैश। कुल मिलाकर 70,000 कैश देना है और बचे हुए को क्या, डिबेंचर। सो मेरी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी होता था ऐसे ही कि हम क्रेडिटर्स को क्या क्या दे रहे हैं। Have you done till this point? Okay, very good. Now my last request to you all is, लास्ट के 2-3 लाइनें पढ़िए, वहां पर कुछ कहा है क्या कि शेयर्स इश्यू और करने, अनइश्यूड शेयर्स थे उनके, देखो 5,000 of unissued shares were offered and were taken up and paid in cash. So we have to make an entry, equity share application account debit, right, to equity share capital, और उसके पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो ये देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Have you understood till this point? Okay, that's lovely. अब सुनिए अगला पार्ट, बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना है। जर्नल एंट्रीज आपके पास है, जल्दी से एक बार बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लेते बेटा।
बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, जरा देखो तो कैलकुलेटर पर कितना था, 33,200 इंटू 10। अब मैं डायरेक्टली 10 ले रहा हूं, समझ में आ रहा है ना क्यों? पहले 6 था, फिर 2 मंगाया, फिर 2 मंगाया, सो 33,200 इंटू 10 प्लस 5,000 इंटू 10, 3,82,000. Okay, so our share capital would be authorized 5 lakh and 3,82,000, जिसमें से 33,200, ध्यान से देखो वर्किंग नोट, इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 6 were received for consideration not received in cash, were issued for a consideration not received in cash. Yes or no? क्योंकि 4 रुपए कैश में मिले थे, सिर्फ 6 रुपए तक की बात करनी है आपको. ओके, आगे बढ़े. बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ आएगा क्या? नो, वी हैवंट टेकन एनी रिजर्व्स एंड सरप्लस. डिबेंचर्स आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. देख के बताओ कितना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर, 50,000 है क्या? क्रेडिटर्स का सारा पेमेंट हो गया है, तो कुछ बचेगा नहीं क्रेडिटर्स. Is that okay? And last part, non-current asset, fixed asset, tangible. में intangible patent rights, it would be 90,000 plus 3,000. 90,000 was balancing figure in entry number 2, plus 3,000 is the liquidation expenses which we have adjusted in patents. 93,000. Current asset, inventories. What is the figure of inventories? 70,000. And trade receivable, 1,45,000. Then cash, 1,24,000. Is that okay? And that gives 4,32,000. अब कैश कैसे बेटा? 15,000 plus 66,400 minus 800 paid in cash plus 66,400 for allotment money minus 3,000 minus 70,000 paid to the creditors plus 50,000 is when we issued the equity shares for cash. Are you getting that breakup? Yep. Try question number 2 as homework. Try question number 2 as homework. It's just like amalgamation you have to do, but goodwill नहीं आएगा, CR नहीं आएगा, बस इन चीजों का ध्यान रखना. Is that okay? बाकी सब कुछ सेम है. We'll try doing it tomorrow again. All right? Yes, for today, let's say bye-bye. God bless you all. Take care.